Hello everyone. In this video, we will learn the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Let us first go through the poem and then we will have a look at its explanation. So I will just read the poem for you. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sudden sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I shall count up to 12 and you keep quiet and I will go. So there is a phrase in this poem, to have no truck with. It simply means to refuse to associate or deal with, to refuse to tolerate something. Now just let us have a look at the English explanation of this poem, and later on we will look at the Hindi explanation as well. So let us first go through the English explanation, which will help you in writing a good central idea of the poem, and you will also be able to answer questions related to this poem. Keeping Quiet is a touching and thought-provoking poem composed beautifully by Pablo Neruda. In this stirring poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. The poet asks us to take a pause from our hectic, monotonous toil in life and maintain a moment of absolute silence to experience an extraordinary moment of peace and togetherness. He urges us not to speak anything in any language whatsoever, because language creates barriers. It causes misunderstandings, disharmony, and divisions within society and among people. The poet draws a unique picture of how everyone, fishermen, salt workers, farmers, and soldiers, ceasing their respective work for a while and putting on clean clothes, would gather together, stand shoulder to shoulder, and walk about with their brothers, doing nothing to express their solidarity with one another. This break from the ceaseless pursuit of our diverse goals will give us time to understand ourselves as well as one another and smooth out our differences and problems. The sudden silence would be an exotic moment, without rush and without whirring of engines, in which we would all be together. This moment of serenity and solidarity will also remove much of our bitterness, conflict, and war. Pablo Neruda warns us not to confuse this stillness with total inactivity or death. He wishes that if we were not so single-minded or obsessive about keeping our lives moving, and if for once we could maintain a moment of silence, it would interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Lastly, the poet advises us to learn from the earth as to how after death of living beings life is reborn, how bright days follow dark nights, and how the inactivity of winter
is followed by the frenzied activity and excitement of the spring. इस समय ये जो समरी है आपको मदद करेगी क्वेश्चन आंसर्स लिखने में। आइए इसी पोएम के समरी को हम हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। कीपिंग क्वाइट एक मार्मिक और विचारोत्तेजक कविता है। मार्मिक जो दिल को छू जाए और विचारोत्तेजक जो हमें किसी चीज़ पर विचार करने के लिए बाध्य करती है, ऐसी कविता है ये, जिसे पाब्लो नेरुडा ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। इस प्रेरक कविता यानी जो हमें प्रेरणा देती है, इस प्रेरक कविता में पाब्लो नेरुडा शांत आत्मनिरीक्षण यानी शांति से आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण और इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता और मनुष्य के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने की बात करते हैं। कवि हमसे जीवन में अपने व्यस्त नीरस परिश्रम से विराम लेने को कहते हैं। शांति और एकजुटता के एक असाधारण क्षण, एक अनोखे क्षण का अनुभव करने के लिए पूर्ण मौन का एक क्षण बनाए रखने के लिए कहते हैं। वह हमसे आग्रह करते हैं कि किसी भी भाषा में कुछ भी न बोलें, क्योंकि भाषा या अलग अलग जो भाषाएं होती है वो बाधाएं पैदा करती है मानव के बीच में। यह समाज के भीतर और लोगों के बीच गलतफहमी, वैमनस्य, आपसी द्वेष और विभाजन का कारण करती है। विचारों की विषमता लाती है भाषा। तो भाषा किसी भी भाषा में बात न करने की सलाह देते हैं एक पल के लिए, थोड़े समय के लिए। कवि हमारे मन मस्तिष्क में एक अनोखी तस्वीर खींचते हैं कि कैसे सभी लोग, मछुआरे, नमक मजदूर, किसान और सैनिक कुछ देर के लिए अपना अपना काम बंद करके और साफ कपड़े पहनकर एक साथ इकट्ठा होते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं और अपने भाइयों के साथ बिना कुछ किए चलते हैं, ताकि एक दूसरे के प्रति अपनी एकजुटता, सॉलिडेरिटी व्यक्त कर पाएं। हमारे विविध लक्ष्यों को, जो हमारे डिफरेंट गोल्स हैं, वेरिंग गोल्स हैं, उसकी जो निरंतर खोज में, उसको निरंतर पाने की होड़ में जो लगे रहते हैं, अगर उससे हम थोड़े पल के लिए विराम ले लें तो हम खुद के साथ एक दूसरे को समझने यानी खुद को भी समझने का मौका मिलेगा और एक दूसरे को भी समझने का मौका मिलेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो मतभेद हैं, जो डिफरेंसेस हैं और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम आसानी से दूर कर पाएंगे। और ये जो साइलेंस है उन प्रॉब्लम्स को, मतभेदों को दूर करने का समय देगा हमें। अचानक की ये शांति हमें बिना किसी हड़बड़ी और बिना किसी इंजन की गड़गड़ाहट वाला एक अनोखा क्षण देगा, जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है, सारे व्यक्ति एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, आत्मनिरीक्षण करें, जिसमें हम सब एक साथ होंगे और इस पल में हम एक साथ होंगे। शांति और एकजुटता का यह क्षण हमारे अधिकांश कड़वाहट, संघर्ष और युद्ध को भी दूर कर देगा। पाब्लो नेरुडा यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस शांति को पूर्ण निष्क्रियता या मृत्यु के साथ भ्रमित न करें। वो कहते हैं कि ये जो साइलेंस मेंटेन करने की मैं बात करता हूँ, उसको आप मृत्यु से या डेथ से या पूर्ण निष्क्रियता यानी टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज ना करें। वह चाहते हैं कि यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाए रखने के प्रति इतने एक दिमाग वाले, इतने ऑब्सेसिव या जुनूनी नहीं होते, हम हमेशा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम इतने ज़्यादा जुनूनी ना हो जाएं, ऑब्सेसिव ना हो जाएं कि हमें आत्मनिरीक्षण करने का भी मौका ना मिले। और यदि एक बार के लिए हम मौन का क्षण बनाए रख सकें तो यह शांत पल खुद को कभी न समझ पाने और खुद को और एक दूसरे को मौत की धमकी देने का जो दुख है, उस दुख को यह शांत पल दूर कर देगा। अंत में कवि हमें पृथ्वी से सीखने की सलाह देते हैं कि कैसे जीवित प्राणियों की मृत्यु के बाद जीवन का पुनर्जन्म होता है, कैसे अंधेरी रातों के बाद उज्जवल दिन आते हैं और कैसे सर्दियों की निष्क्रियता के बाद बसंत की उन्मादी तेज गतिविधि और उत्साह आता है। सो ये जो इस पोएम का एक मैसेज है, वो मैसेज आपको के सामने है ये, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको पढ़कर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।